Okay. So wireless communication is the transmission of the voice and data without using physical wire, uses radio wave to connect the device over a short and long distance. तो एठी हमें रेडियो वेव यूज करूथले डाटा ट्रांसमिशन ପାଇଁ for short and long distance. Feature of wireless communication, fastest growing communication technology. It provide voice and data communication. तो एबे जो wireless technology हमें यूज करछे आदरे voice भी रहउची आउ data communication भी रहउची. Offer regional, national and international coverage, support billions of mobile users worldwide. Use in the home, business, educational institute and industry. ମାନେ ସବୁ ଜାଗାରେ ମୋବାଇଲ ସହିତ ଇଣ୍ଟରନେଟ ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛେ କେବଳ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲିମିଟେଡ ଏରିଆ ନୁହେଁ ବେସ୍ଡ ଅପନ୍ ଦ ସିଲାବସ ରେ ସେଇଟା ଅଛି ତ ମୋବାଇଲ ଯଦି କହିବା ଇଟ୍ ଇଜ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡେଡ ଟୁ ଦ ଭଷ୍ଟ ଏରିଆ ଓକେ ଆମେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଅନଲାଇନ ଅର୍ଡର ଫୁଡ ଜବ୍ସ ओके डिजाइनिंग एआई टूल्स ये सब प्रकार आमको गोटे एमर्जिंग टेक्नोलॉजी जाउची जोटा कि बाय द टाइमिंग आस्ते 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 ग्रोइंग हेकी जाउची the application of the wireless communication that is mobile phone wireless area network smart home माने मोबाइल रे तमे सब जिंस कनेक्ट करिवो तम टीवी भी मोबाइल रे कनेक्ट हबो IRDA गोटे आसी ओके तो सेई जो ऐप रे तमे कोन करि परिबो तमर जो स्मार्ट डिवाइस अछि जो फैन गुडाक ब्लूटूथ फैसिलिटी रहउची तो तम मोबाइल रे देखो स्विच ऑफ स्विच ऑन करि परिबो टीवी भी करि परिबो आउ तापे सेपरेट सेपरेट तुमको रिमोट दरकार नै तो योर मोबाइल फोन इज सफिशिएंट टू कंट्रोल ऑल दिस थिंग ओके तो एबे ए टेक्नोलॉजी रे सब आछि आ मोबाइल मध्ये से समय डेवलप हे जाउची ओके तो एबे जे मोबाइल किनुथो ता भीतर देखो से गोटे रिमोट फैसिलिटी ता भीतर रहउची ओके नुआ टेक्नोलॉजी रे रहउची ऑटोमेटेड टोल कनेक्शन एटा तुम जानछो गोटे स्मार्ट कार्ड रहउची ता भीतर गाड़ी जाउची आ वेटिंग करिया दरकार नै रही की जो पैसा देउतरे आ दबा दरकार नै ऑटोमेटिक कटि जाउची पुଣି उठुची टेलीमेडिसिन लैपटॉप टैबलेट एंड स्मार्टफोन तो ये सब तार एप्लिकेशन एरिया रहउची सेलुलर सिस्टम ने जदि देखिबा ए सेलुलर सिस्टम इज ए मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम इन व्हिच द कवरेज एरिया इज डिवाइडेड इनटू द स्मॉल रीजन तो छोटो छोटो रीजन रे रहउची ईच सेल इज कंट्रोल्ड बाय द बेस स्टेशन different cell can be reused same frequency reuse help spectral efficiency and provide reliable voice and data communication जोटा हमें सेलुलर सिस्टम यूज करछे जोटा कि आसिला कोन 2G advantages of the digital communication जोटा 2G रे कोन रहउची ना बेटर वॉइस क्वालिटी देन 1G 1G रे कोन होतला तुमे जेतले कॉल करथला आ गोटे वॉइस ता आउ जानको पाखो कनेक्ट हे होतला बेले बेले कथा भितरे वॉइस ट्रांसफर हे जाय आउ जन पाखो कॉल पळे से लोक रिलेटेड नथिबो नंबर डायल करबो आउ जन पाखो रिंग हो ओके बट से जिंस एठी रिमूव होला हां 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 then smaller and cheaper device lower power consumption रहउची higher network capacity efficient use of radio spectrum and error correction coding किछि error जदि रहउची ता कोडिंग रहिबो डाटा कंप्रेशन रहिबो एनक्रिप्शन फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन तो ये सब डिजिटल कम्युनिकेशन आ भीतर रहिबो सर्विस प्रोवाइडेड बाय द डिजिटल कम्युनिकेशन वॉइस कॉलिंग एसएमएस ईमेल इंटरनेट एक्सेस देन वीडियो कॉलिंग तो ये सब जिनस सेलुलर सिस्टम अंडर रे रहिबो ओके तो फास्ट हम एटा नोट करिनु आ पेजटा पूर्व काली लिखि नथिला एटा एटा तो
The first operational cellular communication system was introduced in Norway. So Norway रे introduce ହେଲା in 1981. Later similar system were developed in Japan, Finland, Sweden, United States. तो ये सब जगह रे हमारा मोबाइल टेक्नोलॉजी आसिला. The first generation mobile technology of mobile communication technology, it uses analog signal to transmit voice call between the mobile call. तो voice call हिसाब रे आमे कौन कले मोबाइल कॉलिंग सब कले 1G जेतबे आसिला एटा आसिला 1981 नो. ओके तो एटा बहुत समय पर्यंत रहिला. इट यूजेस द एनालॉग कम्युनिकेशन. तो जो मोबाइल फोन आगु थिला एटा सब एंटीना बेस रहितला. ओके एनालॉग सिग्नल यूजेस फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन फॉर रेडियो ट्रांसमिशन यूजेस फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्नोलॉजी. तो ये जो मोबाइल रे जो टेक्नोलॉजी हमें यूज करछे आको कहवा जाय एफडीएमए, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, and channel capacity is 30 kilohertz, operate in 900 megahertz band based upon the advanced mobile phone service. Our advantages कौन रहिबो? Introduce wireless mobile communication, enabled voice communication over long distance, laid foundation for future mobile generation. Limitation cannot convert voice call into digital form. Voice call को digital form रे convert करी हबो नहीं. नो ग्लोबल रोमिंग फैसिलिटी, कौन से प्रकार ग्लोबल रोमिंग फैसिलिटी हबनी. लो नेटवर्क कैपेसिटी, पुअर वॉइस क्वालिटी रहिबो, लेस सिक्योर कम्युनिकेशन, लिमिटेड डाटा सर्विस. तो एतिकी तार लिमिटेशन रहिबो. फास्ट जनरेशन ऑफ मोबाइल नेटवर्क, ए कंटीन्यूअस इलेक्ट्रिक सिग्नल यूज फॉर वॉइस ट्रांसमिशन. এটা କେवल वॉइस ट्रांसमिशन ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର करा जाउतला. ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳିଆ ଆଣ୍ଟିନା ଆମେ ୟୁଜ କରୁଥିଲେ. ଓକେ ଲେଖା ହେଇଛି. ଆମେ ରୋମିଂ ଯୋଉଟା ରହୁଥିଲା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଲଗା ଷ୍ଟେଟ କୁ ଯାଉଥିଲେ କଣ ହଉଥିଲା? ରୋମିଂ ପଡୁନଥିଲା. ତା ପାଇଁ ତମେ କଣ କରୁଥିଲ? ଚାର୍ଜେସ୍ ଦଉଥିଲା. ଏବେ କଣ ହଉଛି? ଏବେ ସେ ଜିନିଷ ଦବାକୁ ପଡୁନି. ଏଇ ଜିନିଷ ରହୁଥିଲା. ରୋମିଂ ମାନେ ତମେ ଗୋଟେ ଓଡିଶା ନେଟୱାର୍କରୁ ବାହାର ନେଟୱାର୍କ ଗଲ, କଲିକତା ଗଲ, ତ ସେଠି ରୋମିଂ ରେ ଆସିଛି ଆର ହେଇକି ଲେଖା ଅଛି. ଅଦର କଣ୍ଟ୍ରି ବି ଆସିଛି ସେମ୍ ମୋବାଇଲ. ହଁ ଅଦର କଣ୍ଟ୍ରି ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ମାନେ ଅଲଗା ଇଏକୁ ଗଲେ ରୋମିଂ ଚାର୍ଜେସ୍ ତମକୁ ଦେବାକୁ ପଡୁନି. ଆଗରୁ ଚାର୍ଜେସ୍ ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା. ରୋମିଂ ପାଇଁ ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ ରିଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ପଡେ, ଡବଲ ପଇସା କଟିବ. ତ ଏବେ ସେ ଜିନିଷ ଏବେ ଯେତିକି ତମେ ରିଚାର୍ଜ କରୁଛ ତା ଭିତରେ ସେ କମ୍ୟୁନିକେସନ.
The second generation computer, the 2G is the second generation mobile communication technology. It was introduced around 1990 and it is based upon the low band digital data. माने आदरे data तमे connect करि पारथले किंतु एटा बहुत slow सब रहउतले. It provide better voice quality, improved security and additional messaging service. Additional messaging service it रहिबो. आ भितरे एटा इंट्रोड्यूस होला 1990 यूजेस डिजिटल कम्युनिकेशन हमें यूज करथले फ्रीक्वेंसी बैंड 850 to 1900 support voice and data communication, provide better voice quality and network capacity, offer improved security and reliability. Improved security rahibo nare reliability rahibo. Okay, then service provided by 2G SMS, PMS, multimedia message तो ये जिनसा हमें यूज कर पाइए. Okay, लिखो.